हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ MCQs की अंडर पार्ट 17 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज। आई होप आपने सो फार लर्निंग डेवलप की होगी इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर। हमारे चैनल के ऊपर मुख्तलिफ सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, सो डू वॉच देम एंड मेक योरसेल्फ इक्विप्ड विद सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड MCQs। ये जो वीडियोस हैं CivTech सिंप्लीफाइड के ऊपर SSC JE एग्जाम, गेट टेस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए स्पेशली तैयार की गई हैं। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड भी videos available हैं, so please watch those playlists as well. So let's proceed further this video part, जहाँ पे हम एक presentation के थ्रू further आज MCQs नंबर 161 टू 170 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी कम्युनिटी में CivTech Simplified को जरूर शेयर करें और हमारी टीम का हिस्सा बने बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम MCQs इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 17 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 टू 170। क्वेश्चन 161 says that a parabolic glacis type fall is commonly used and known as option A Monteith Fall, option B English Fall, option C Sarda Fall, option D Vertical Fall. So parabolic glacis type fall is commonly known as montage fall. A is the correct answer for this question. 162. When the water is thrown into the well over a crest from where it escapes near its bottom, the type of fall is known as option A rapid fall, option B cylinder fall, option C pipe fall, and option D glacis fall. So B is the correct option for this question. When water is thrown into a well over a crest from where it escapes near its bottom, the fall is known as cylinder fall. B is the correct answer for this question. 163. A sudden fall of level of ground along the alignment of a canal joined by an inclined bed is called option A rapid fall, option B cylinder fall, option C sudden fall, options D hydraulic jump. So it's rapid fall. जब अचानक आपका फॉल क्रिएट हो जाए फ्लो के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड अ रैपिड फॉल। 164. द सिलेंडर और वेल फॉल is quite suitable and economical for option A low discharge and low drops, option B low discharge and high drops, option C high discharge and low drops, option D high discharge and high drops. सिलेंडर या वेल टाइप जो है वो फॉल इज सुटेबल फॉर लो डिस्चार्ज एंड हाई ड्रॉप्स। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 165. Which of the following statement is wrong? Option A. In a trapezoidal notch fall, the top width of notch is kept between 3 by 4th of full water depth above the sill of the notch. Option B. The energy dissipation takes place by the provision of roughening devices. Option C. The siphon fall is designed to maintain a fixed supply level in the channel. Option D. Energy dissipator are provided for small discharges. So A, B, and C are correct, while D is a wrong answer. So D here we have to select a wrong. So D is the wrong answer. 166. The fall which can be used as a meter fall is option A vertical drop fall, option B fumed glacis fall, option C unfumed glacis fall, option D none of these. So it's wall which can be used as a meter fall is called vertical drop fall. A is the correct answer for this question. 167. A canal outlet should, option A, be so designed that farmer cannot tamper with its function. Option B, be simple so that it can be constructed or fabricated by local masons. Option C, draw its free share of silt carried by the distributing channel. Option D, none of all of these. So all these are the correct answers for this question. कैनाल की जो आउटलेट है जहां से आपने डिस्ट्रीब्यूटरी निकालनी है वो ऐसी हो कि फार्मर उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, कोई टेम्परिंग या मिस फंक्शन उसके ना कर सके। दूसरी बात यह है कि आपको लोकल लेबर और लोकल मेसन्स आपने यूज करने होते हैं, सो डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो ताकि लोकल लेबर उसको बना सके। थर्ड ये है कि सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी की भी उसके अंदर होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर। तो ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर
answers for this question. So D here is the correct option. 168. A device which ensures a constant discharge of water passing from one channel to another irrespective of water level in each within certain specified limit is called option A flume, option B module, option C meter, option D none of. Yes, that is called module. A device which ensures a constant discharge of water passing from one channel to another irrespective of water level. दोनों के वाटर लेवल का ख्याल ना रखते हुए एक चैनल से दूसरे चैनल में अगर डिस्चार्ज जाना है तो मॉड्यूल ऐसी डिवाइस है जो उसको कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन करे. 169. An outlet in which discharge depends upon difference of level between water level in distributary channel and water course is known as non-modular outlet. Option B semi-modular outlet, option C modular outlet, and option D is rigid out. So A is the correct answer for this question. It's non-modular. अगर दोनों के लेवल की वजह से डिस्चार्ज में फर्क आ रहा है, so of course that is a non-modular outlet. 170. In a flexible outlet, the discharge depends upon the option A water level in distributary, option B water level in water course, option C difference of water levels between distributary and water course, option D none of these. So in a flexible outlet जो discharge जो होता है वो डिपेंड करता है water level in distributary के ऊपर. A is the correct answer for this question. So friends, this was part 17 of our ongoing video series in irrigation engineering multiple choice questions. इसमें हमने mainly difference falls के ऊपर discussion की. उसके अलावा हमने मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर फ्लोस के ऊपर या डिवाइसेस के ऊपर भी बात की. जब आपने मेन कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी की तरफ फ्लो को डाइवर्ट करना है तो लेवल के साथ जो दोनों का वाटर लेवल है उसके साथ डिस्चार्ज डिपेंडेंट ना रहे, सो मॉड्यूलर डिवाइसेस उसके लिए यूज होती हैं. इसके अलावा हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज आपके साथ प्रेजेंट किए. आई होप आज की वीडियो में आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी. इन वीडियोस को मुकम्मल एंड तक देखा करें ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो. सो लेट्स मीट अगेन इन पार्ट 18 जहाँ पर फर्दर हम 10 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.